Hello everyone, welcome back to Sthiti's Vet Corner. I am Dr. Sthiti Pragya, a veterinary graduate. So today's video is very much interesting and important for the veterinary graduates and those who are willing to study veterinary science in future also. आप लोगों को टाइटल देख के पता लग गया होगा कि ये वीडियो सैलरी के ऊपर है एंड येस दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द सैलरी ऑफ अ वेट. आप लोग पढ़ाई क्यों करते हो? ऑफ कोर्स नॉलेज के लिए पढ़ाई करते ही हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको सैलरी अच्छा मिले ये सबका ख्वाहिश रहता है. एंड nowadays people first look at the salary section when any job notification comes. So before taking admission into veterinary course, one may come across many questions like how much money a vet graduate can earn, what will be the salary of a vet, increment कितना है, PhD कंपलसरी है कि नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए. ये सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे. And yes, in this video you will know about the salary in revised pay scale in most popular jobs in veterinary sector. I'll discuss one by one with their minimum eligibility criteria. After watching this video, if you like my video, hit the like button and please subscribe to my channel. By subscribing me, you are motivating me to make more videos related to veterinary. And while subscribing, press the bell icon so that you will get notified when I upload the new video. So let's start the video. So first of all, I'll say about the salary of assistant professor with the minimum eligibility criteria. First मैं salary बताऊंगी, उसके बाद मैं minimum eligibility criteria बताऊंगी. So there are 3 faculty ranks: assistant professor, associate professor, then professor. आपका रिक्रूटमेंट होने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, उसके बाद प्रमोशन होकर एसोसिएट प्रोफेसर, देन प्रोफेसर. सो हियर इज द रिवाइज्ड पे फॉर टीचर्स इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस. I have taken it from an authentic source. I am telling you from where I have taken it. I have taken that from here. It is the draft UGC regulations on minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staffs in universities and colleges and measures for the maintenance of standards in higher education 2018. यहाँ पे प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, सैलरी सब दे रखी है. इसमें से आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में बताऊंगी. मुझे जितना इम्पॉर्टेंट लगा मैं आपको इंटरप्रेट करके बता रखी हूँ इस वीडियो में. सो अगेन कमिंग टू द रिवाइज्ड पे फॉर टीचर्स इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस. इन द लेफ्ट कॉलम यू कैन सी द एग्जिस्टिंग पे. दैट मीन्स 6th पे कमीशन में सैलरी कितना था. ये तो अभी हमको डिस्कस नहीं करनी है, रिवाइज पे में देखेंगे. इन द राइट कॉलम you can see the revised pay, means after implementation of 7th pay commission salary में कितना enhance हुआ है. Assistant professor at academic level 10 with rationalized entry pay of 57,700 rupees per month. तो assistant professor के entry level academic level 10 से start होते हैं. तो recruitment होने के बाद assistant professor का salary 57,700 होगी, excluding DA and HRA etc. After promotion levels बढ़ते जाएंगे. ऐसे ही levels 11, 12, 13A, 14, 15 हैं. ये सीनियरिटी के हिसाब से बढ़ता जाएगा. सीनियरिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रिसर्च पब्लिकेशंस, वर्कशॉप्स और कुछ फैक्टर्स भी हैं लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यू हैव गाइडेड. ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं. तो असिस्टेंट प्रोफेसर एट एकेडमिक लेवल 11 विथ रैशनलाइज्ड एंट्री पे ऑफ 68,900 रुपीज़ पर मंथ. तो असिस्टेंट प्रोफेसर एट एकेडमिक लेवल 11 में एंट्री पे 68,900 होगा. Assistant professor at academic level 12, entry pay is 79,800 rupees. Then associate professor at academic level 13A with entry pay of 1,31,400 rupees. So level 13A is the level of associate professor. Then coming to the professor. Professor at academic level 14 with rationalized entry pay of 1,44,200 rupees. Then professor at academic level 15 with rationalized entry pay of 1,82,200 रुपीज़ पर मंथ. तो प्रोफेसर के आते आते आपको 1,82,200 रुपीज़ मिलेगा पर मंथ. सो कमिंग टू द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. आपको पता होगा मास्टर्स विथ नेट वाज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर, बट द कन्फ्यूजन अराइज व्हेन आवर फॉर्मर यूनियन एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी जो ट्वीट किए थे द पीएचडी इज कंपलसरी फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर. अब कन्फ्यूजन हो रहा है पीएचडी मैंडेटरी है कि नहीं. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पीएचडी मैंडेटरी है कि नहीं. सो हियर इज एन आर्टिकल फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड June 13, 2018.
where Union HRD Minister Prakash Javadekar ji said, PhD degree has been made mandatory for the direct recruitment to the post of assistant professor in universities from 2021. However, master's degree with NET or PhD would continue to be the minimum eligibility criteria for direct recruitment in colleges. तो PhD मैंडेटरी हो गया है यूनिवर्सिटी में फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, नॉट इन कॉलेजेस. कॉलेजेस में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मास्टर्स विथ नेट है. एंड हियर इज दैट ट्वीट वेयर ही हैज़ रिटन दैट PhD degree shall be a mandatory requirement for the direct recruitment to the post of assistant professor in universities with the effect from July 1, 2021. However, master's degree with NET or PhD will continue to be the minimum eligibility requirement for direct recruitment to the post of assistant professor in colleges. So it has been written in the draft. See the highlighted area. The PhD degree shall be a mandatory qualification for appointment and promotion to the post of associate professor. The PhD degree shall be a mandatory qualification for promotion to the post of assistant professor or selection grade or academic level 12 in universities. The PhD degree shall be a mandatory qualification for direct recruitment to the post of assistant professor in universities with the effect from 1/7/2021. For promotion to the post of assistant professor in colleges, the PhD shall be a mandatory qualification if the date of eligibility falls on or after 1/7/2021. इसका मतलब है असिस्टेंट प्रोफेसर टू एसोसिएट प्रोफेसर के प्रमोशन में PhD डिग्री मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, लेकिन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए PhD डिग्री मैंडेटरी हो जाएगा फ्रॉम 1 जुलाई 2021. सो ओवरऑल देखा जाए तो मास्टर्स विथ नेट shall remain the minimum eligibility criteria for the post of assistant professor, but PhD degree shall be a mandatory for the direct recruitment to the post of assistant professor in universities with the effect from 1st July 2021. So the first highlighted portion says that NET is the minimum eligibility for appointment of assistant professor. Second highlighted portion में बोल रहा है कि 2009 and 2016 से पहले जो कोई भी PhD कर रखे हैं उनके लिए नेट की आवश्यकता नहीं है. Then coming to the levels, entry level of assistant professor is academic level 10. Eligibility is masters plus net plus PhD after 1st July 2021. Then assistant professor at academic level 10 to senior scale academic level 11 के promotion के लिए 4 years of service in academic level 10 plus 1 research publication during assessment period. And other criteria like workshops etc. मैं उसको नहीं बता रही हूँ. Then assistant professor at academic level 11 to assistant professor selection grade or academic level 12. Eligibility is 5 years of service in that grade plus 3 research publication in the peer reviewed journal or UGC listed journals during assessment period plus other criteria. Then for the promotion of assistant professor to associate professor at academic level 13A, eligibility is selection grade assistant professor who have completed 3 years of service in that grade plus other criteria. And then from the promotion of associate professor at academic level 13A to the professor at academic level 14, the minimum eligibility criteria is associate professor who have completed 3 years of service in that grade plus minimum of 10 research publication in peer reviewed or UGC listed journals, out of which 3 research papers shall be published during the assessment period. And then from the promotion from professor to senior professor at academic level 15, eligibility is 10 years as a professor plus minimum of 10 publications in the peer reviewed or UGC listed journal and 2 PhD successfully awarded under his or her supervision during this period plus other criteria. Then the most popular job is veterinary assistant surgeon, VAS. Eligibility is BVSc degree plus you have to qualify your state PSC entrance. Here the entry pay is 46,200 rupees per month, of course excluding DA and HRA, with a grade pay of 4,600. But ये वैरी करता है स्टेट टू स्टेट. ये उड़ीसा स्टेट का है, कोई स्टेट में सैलरी और भी ज़्यादा है. VS पोस्ट से आप प्रमोशन होके चीफ डिस्ट्रिक्ट वेटनरी ऑफिसर तक जाओगे, उसमें सैलरी
अराउंड 1,45,000 तक आएगा. देन ओपनिंग ऑफ ओन प्राइवेट क्लिनिक. Here you can earn from a minimum of 15,000 rupees to a maximum of 1 lakh or above, but it depends on various factors like location of your clinic, technical skills, success rate of your clinic. आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा तो और भी इनकम कर पाओगे. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना. And also please subscribe to my channel. By subscribing me, you are motivating me to make more videos related to veterinary. And while subscribing, press the bell icon so that you will get notified when I upload the new video. So till then, stay safe, stay home, keep smiling.